Very good morning, student. This is Sonal Gedam from the chemistry department. Today we are going to discuss the topic, the equation of the entropy change of an ideal gas with the temperature, pressure and the volume, that is the TV and the TP. And also discuss about the entropy change for the isothermal process. The entropy change for the isothermal process. Now, let us start the discussion on this equation we were got from the previous lectures. So this is the first one equation. We given the 4 number. So delta S is equal to CVln T2 upon T1 plus RLn V2 upon V1. Similarly, the second equation, that is the entropy change, is equal to, that is delta S is equal to Cpln T2 upon T1 plus RLn P1 upon P2. So these are the two equations is for the entropy change of an ideal gas with a change in temperature, pressure and the volume. And this also called as the entropy change as a change in temperature, pressure and volume. And also again the entropy as a state function for the temperature and volume. This is the first equation which is showing what? That is the entropy. It is the state function of the temperature and the volume. And the second equation for the entropy change, it is the state function of the temperature and the pressure, that is the TP. For your understanding, the delta S is nothing but what? The change in entropy. Cv is the heat capacity at the constant volume. T1 and T2 is the initial temperature and the final temperature. R is the gas constant, and again this V1 and V2 is what? That is the initial and the final volume. Similarly for the TP equation, temperature and this pressure, where delta S is the entropy change, Cp is the heat capacity at the constant pressure, again this similar, initial and the final volume, gas constant, that is R, and the initial pressure and the final pressure. Now, as we know about these two equations, the entropy as a state function of TV, which is calculated in the previous lecture, and the second equation, entropy as a state function of TP. These two equations can be written in the form of the log form and n form. The log form and n form, the meaning is same. तीनों भी जो इक्वेशन जो अभी लिखेंगे उसके मीनिंग सेम रहेंगे, ठीक है. So this first one equation, delta S is equal to 2.303 Cv log of T2 upon T1 plus 2.303 R log of V2 upon V1. So this the log form equation we given here for number 4a, and the second equation for the TP equation, that is the temperature and pressure, delta S is equal to 2.303 Cp log of T2 upon T1 plus 2.303 R log of P1 upon P2. The number is 5a for this equation. And the next one is we can also written in the form of the delta S is equal to NCV ln T2 upon T1 plus NR ln V2 upon V1 for TV equation, that is temperature and volume, this one. And also written in the form of delta S is equal to NCP ln T2 upon T1 plus NR ln P1 upon P2, as same this, but change is what? Temperature and pressure. So the N is what? Suppose the gas which is in the N mole of gas, so we apply this equation for that particular system. अगर ideal gas N mole of gas है, number of mole of gas, तो उसके लिए this equation use for the calculation of the entropy change. Okay, again just the understand about this term.
The delta S is equal to, that is change in entropy, N is the number of mole of gas, Cp is the heat capacity at constant pressure, and this is temperature and initial temperature, that is the T1, final temperature, that is the T2. This is the R, gas constant, final pressure and the initial pressure. Similarly, for the Cv equation, entropy change, number of moles, Cv is the heat capacity at the constant volume, initial temperature T1, final temperature T2, number of moles, and this R is gas constant and V1 is the initial volume and the final volume. This equation which is further used for the calculation of the entropy change for the various processes. Now we are at the very interesting part of this topic, that is the what is the entropy change for these processes. First one process is isothermal process, second one is the isochoric, and the third one isobaric process, and the last one the adiabatic process. So today we are going to discuss about what is the entropy for this isothermal process. So first of all, the entropy is what? क्या मीनिंग है एंट्रोपी का? कि एंट्रोपी क्या करता है? डिसऑर्डरनेस या फिर रैंडमनेस मेजर करता है. अगर मॉलिक्यूल्स या सिस्टम में डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो जाएगा, मीन्स मॉलिक्यूल्स एक जगह पे फिक्स नहीं रहेंगे, तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है. मीन्स द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी बिकम मोर पॉझिटिव्ह. सो अगर आपल्याला माहित करून घ्यायचं आहे की आयसोथर्मल प्रोसेस साठी एंट्रोपी काय असणार, मीन्स त्याची एंट्रोपी वाढणार की कमी होणार, मीन्स वो सिस्टम का रैंडमनेस कम होगा कि बढ़ेगा. व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो प्रोसेस को आयसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं. आणि त्या प्रोसेस मध्ये जर मॉलिक्यूल्स जे असणार ते रन करणार एका जागेपासून दुसऱ्या जागेपर्यंत, मीन्स काय होणार तिथे? एंट्रोपी वाढणार की कमी होणार? सो वी विल सी इन दी नेक्स्ट पीपीटी. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दी आइसोथर्मल प्रोसेस. सो एज पर द डेफिनेशन, ऐसी प्रोसेस जो है जो कोई पर्टिकुलर सिस्टम में हो रही है, द प्रोसेस उसका अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, that is the T1 and T2 initial and final temperature constant है, उसका T constant है, temperature constant है, वैसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस? the temperature is constant. Suppose this is the system. Okay, this is the system which is undergoing what? The process. In that process is what? Temperature constant. The process is called as the isothermal process. And the outer part of the system is well known, that is the surrounding. So ऐसी प्रोसेस के लिए what is the entropy? एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा? दिस डेल्टा एस टी इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज द एंट्रोपी चेंज एट अ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ऐसी प्रोसेस के लिए जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसके लिए एंट्रोपी क्या होंगी? मीन्स वो प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो रैंडमनेस बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं. We have to understand by taking the example. Now we already know this equation which is calculated in the previous lectures, that is this delta S is equal to CVln T2 upon T1 plus Rln V2 upon V1, and second equation is what? Delta S CPln T2 upon T1 plus Rln P1 upon P2. These are the two equations. Okay, in these two equations, both consist of the temperature term. Both consist of the temperature term. So for the calculation of the isothermal process, we use both these equations. So consider these two equations, and we are right here delta St because the process is isothermal. So the equation is what? CVln T2 upon T1 plus Rln V2 upon V1. We given the number 1,
And second also we write here delta St is equal to Cp ln T2 upon T1 plus R ln P1 upon P2. But the process is what? Isothermal. Means the temperature is constant. Means what? This T1 and T2 become 0. Means whole term, that is whole this Cv ln T2 upon T1 is equal to 0 for first equation, and similarly for second equation, that is the Cp ln T2 upon T1 is equal to 0. So we will get what from this equation 1 and 2? Delta St. What is the remaining part? R ln V2 upon V1, and again the delta St R ln P1 upon P2. So from these two equations, we will get idea about the what is the entropy for the isothermal process. So understand from the previous equations, we got the entropy change for the various processes. So this equation is applied for the isothermal, isobaric, isochoric and the adiabatic process for calculation of the entropy change. Now, so this is the equation at the temperature constant for the entropy change. These are two equations. So let us understand by the example. Okay. So this is the V means initial volume. यहाँ पे जो molecules रहेंगे यहाँ तक रहेंगे. ठीक है, मैंने यहाँ पे शो किया नहीं है because only what the compression and expansion I just want to explain here. So अगर ये gas molecule से यहाँ पे कैसे है at V1 वॉल्यूम, पहला जो वॉल्यूम है उसका V है, मीन्स यहाँ पे रहेंगे. ओके, सो अगर मैंने गैस को क्या किया, वो कंप्रेस हो गया, गैस क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, मीन्स नीचे आ गया, तो मॉलिक्यूल्स जो है जो V पे थे वो V1 में आ गए. सो पहले अगर यहाँ पे होंगे मॉलिक्यूल तो थोड़ी सी जगह ज्यादा है तो मॉलिक्यूल घूम सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे कंप्रेस होने के बाद मॉलिक्यूल कैसे पास पास आ रहे हैं और कुछ ऑर्डर फॉर्म में आ रहे हैं. काही मॉलिक्यूल्स कसे होऊन राहिले, ऑर्डरली अरेंज होऊन राहिले. कसे होऊन राहिले, ऑर्डरली अरेंज होऊन राहिले ऑन कंप्रेशन. ओके, एंड इन नेक्स्ट सिस्टम मीन्स दिस सेम सिस्टम, अगर क्या कर दिया अपन ने, मॉलिक्यूल को एक्सपांड कर दिया, सॉरी गैस को एक्सपांड कर दिया, यू कैन सी दैट इज दी V2. दिस इज द सेकंड एक्सपांशन ऑफ गैस, दैट इज V1 इज द कंप्रेशन ऑफ गैस. अगर मॉलिक्यूल को एक्सपांड कर दिया, सो यू कैन सी देयर इज ए व्हाट, स्पेस इज मोर. यहाँ पे जगह कितनी है, बहुत सारी जगह है मॉलिक्यूल को मूव करने को. म्हणजे मॉलिक्युल्स जे आहे ते एका जागी राहणार नाही, ते मूव करत राहणार. ठीक आहे, मीन्स इतक्या जागेमध्ये, मीन्स अगर ज्यादा जगह है तो मीन्स रैंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ऑन एक्सपांशन मीन्स व्हाट, द थिंग इज व्हाट हियर, अगर कंप्रेशन होता है गैस का, गैस नीचे आ जाता है इन फ्रॉम दी, दिस इज दी व्हाट, इनिशियल स्टेट, मीन्स नीचे कंप्रेशन, आफ्टर दी कंप्रेशन ये V1 पे आता है, तो मॉलिक्यूल जो रहते हैं गैस के क्या होते हैं, पास में आने के बाद थोड़े उनका जो है रैंडमनेस जो है वो कम हो जाता है. ठीक आहे, अगर रॅन्डमनेस या डिसऑर्डरनेस कम हो गया, मीन्स कमी झाला, तर एंट्रोपी काय होते, कधी पण कमी होते. मीन्स द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी बिकम डिक्रीजेस ऑन द कंप्रेशन ऑफ द गैस. देखो यहाँ पे आप देख लो कि कुछ मॉलिक्यूल्स कैसे खड़े हैं, इन ऑर्डर फॉर्म में है. ठीक है, इन द सेकंड केस अगर मॉलिक्यूल क्या होता है, गैस क्या होता है, एक्सपांड होता है, मीन्स यहाँ तक उसको जगह है मॉलिक्यूल्स को घूमने को, फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर पोजिशन. ओके, तो थिंग इज व्हाट, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा मूव करेंगे आणि मॉलिक्यूल एका जागेवर राहणार नाही. त्याचा अर्थ काय आहे की मॉलिक्यूल्स फिरून राहिले, मीन्स एक पोजीशन फिक्स नहीं त्यांची, म्हणजे काय झालं, त्यांची डिसऑर्डरनेस तो क्या हो गया, उनका बढ़ गया. डिसऑर्डरनेस क्या हो गया है, बढ़ गया है. मीन्स अल्टीमेटली ऑन द एक्सपांशन द एंट्रोपी बिकम increases, entropy become increases. So we can conclude here that as the volume, that is the V2 is greater than V1, so entropy at constant temperature is positive. Entropy become
पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम ज्यादा है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम, अगर इसका V1 वॉल्यूम है तो क्या हो रहा है, V1 है तो क्या है, देयर इज व्हाट, रैंडमनेस इज डिक्रीजेस। ओके, सो एंड V2 क्या है, V2 में रैंडमनेस बढ़ गया क्योंकि जगह ज्यादा है, मीन्स दी अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, दी एंट्रोपी बिकम मोर पॉजिटिव at constant temperature. Similarly, on the compression of gas, entropy become decreases and expansion of gas entropy become increases. This is the conclusion for the isothermal process. When the volume is more, that is the final volume, the entropy is positive, and on the compression the entropy become decreases, and on the expansion entropy become increases. Now, as from the previous discussion, today we learn about the equation for the entropy change of an ideal gas with a change in temperature, pressure and volume. We also discuss about the N form equation, log form, and also the Ln form equation for TV and TP, and also conclude about the entropy as a state function of the TV and TP. From this equation, we also learn about the what is the entropy change for the isothermal process. अगर process isothermal है, means temperature constant है, तो what is the entropy? उसकी entropy बढ़ती है कि कम होती है? अगर there are the two possibility, volume V2 volume is greater than V1, so there is a what happen? The entropy is more positive, and on the compression of the gas, the entropy become less, that is the decreases the entropy, and in case of expansion of the gas, the entropy become more and more, because of there is what happen, अगर expansion होता है गैस का तो molecules they are not at their position, they घूमते रहेंगे इधर उधर. So because of this increases in randomness, the entropy is more for the isothermal process on the expansion of the gas. So student, this is for your extra information. So which type of question asked for this entropy change of an ideal gas? Entropy change as the state function of a temperature and volume. The first one equation, fourth one equation actually, and also temperature and pressure for the 5 marks. Or the same question asked in the form of give the mathematical expression for the variation of the entropy with temperature, pressure and volume. You have to write the all the equation, that is the 4 and 5 equation. Okay. Similarly, this is a question asked like calculate the entropy change of an ideal gas with a change in temperature, pressure and volume. Three questions are same, and the answer also same. Okay, and also this is 1 mark question, what is the entropy change for the isothermal process, and the explain the change in entropy when the temperature is constant of an ideal gas. So this is 1 mark question. Okay, thank you so much student. In next lecture we will discuss about the remaining processes, isochoric, isobaric and the adiabatic process. But remember that एंट्रोपी क्या है, विच मेजर द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस. कोई भी सिस्टम रहेगा, कोई भी प्रोसेस रहेंगी, उसका एंट्रोपी अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे कि अगर वो सिस्टम का रैंडमनेस बढ़ रहा है तो एंट्रोपी पॉजिटिव, अगर कम हो रहा है तो दैट इज द एंट्रोपी नेगेटिव. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.